Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundhar Sulakshana, and I will be teaching you economics. So, students, a warm welcome to your 11th standard. So, today we are going to see standard 11th, economics, chapter number 1, economics and introduction. But students, as it is a new subject to you all, so before starting the chapter, we are here to see an introduction of the economics and myself. Myself, Sengundhar Sulakshana, I am teaching economics from last 9 years. Even I have taught the economics in CBSE and ICSE school. So nowadays, from recently, we can say that from few years I am teaching in GSEB. So rather than that, I am teaching economics in a very detailed manner. I like to teach economics very much. First of all, the thing is that I love economics subject very much. So I have a personal interest on economics. So I hope you will enjoy my company in the economics journey. You will not bore on the economics lecture. Rather than that, first of all, if you are seeing the economics subject, a subject which is very practical to know of. To be honest, as an economic teacher, if I'm telling, if you are seeing the economic subject, it deals up with a concept which is very practical in our day-to-day life. The monetary portions, if you are seeing unemployment, poverty, so you all have heard these all topics in the SS. We cannot say that this is a new topic to you, but a subject's name, if you are seeing, if you have read the economics in the name of SS, in SS you have a topic of economics of India, Indian economic in 10th standard, even you have read it in a very detailed manner. So after that we are seeing economics as a particular subject in the 11th standard, basically in the commerce department. So here I am a guider to you for the economics subject. So in this chapter or in this textbook, we can say that in 11th you are going to see 11 to 12 chapters related to the economics, in which you will see economics as an introduction. Rather than you will see unemployment, poverty, national income, what is per capita income, what was the Indian economic, how the Indian economic changed, what is internal trade, what is external trade, what are the types of business that is included in the economy. Such topics are covered up in the economic portion. So let us discuss about the introduction and the chapters wide discussion, or we can say the introduction of each and every chapter. Then we will start up with the chapter number 1. So students, without wasting the time, let us move on with the line-to-line explanation of the chapter number 1 rather than the other chapters introduction in the PDF manner from the further portion of the video. Students, this is the index of your standard 11th economics textbook. So here we are going to see what are the topic that we are going to cover up. So here there are 11 chapters in your economics syllabus. The first chapter is of economic and introduction, in which we will see about the economics, the core concept of the economics in a very detailed manner, the introduction of the economics as a subject, and why it is important to see the economics that we are going to cover up in the chapter number 1. Chapter 2 is the fundamental concept and terminology. So what are the concepts that are included in the economics and what are the terminologies? Even in accounts also you might see the terminology, the definitions of particular word or the particular, we can say that probably used of words in the economics. That definitions we will see it in a very detailed manner. The chapter 3 is demand. The demand is considered as an important topic in economic because the market is dependent on the demand only. So the demand is seen up in a very detailed portion. And after that, the chapter number 4 is supply. So when it comes to demand, the demand is always dependent on supply, or the supply is dependent on the demand. So both are an interconnected topic. That's why after demand, we are instantly seeing the supply. So after the supply, the chapter number 5 is cost of production and concept of revenue. So for making any portion, we need the expense. So how the cost of production, for making any production, what was the cost and how it can be dealt up? What are the topics included in that? How we see it in economics? That whole portion has been discussed about that in a very detailed manner. After that, we have seen the concept of revenue. Concept of revenue means in that we have to see what type of income and what type of income
income sources can be generated in a business or in various type of businesses. After that, 6, it is a market. You know that there is so many market surrounding us, but what are the types of the market and in which type of market can be seen up in the economics? That all topics have been covered up in the chapter number 6. Then it is 7, Indian economic. In chapter number 7, we are going to see the ancient Indian economic, the we can say that the middle age one, when the British left at that time one, and after that when British ruled, and rather than that, now presently what is the Indian economic, what are the amendments means we can say the updates, what are the updates that has been taken up place in Indian economic. Financial status, economic means financial status, is considered as the important factor in chapter number 7. Then we are going to see the chapter number 8, economic reform. It is seen of that after the independence in 1947, at the year 1991, certain changes were being done up to develop the country financially. That is considered as economic reforms. So that whole portion we are going to see it in a very detailed manner in the chapter number 8. Then it is national income. By national income, you can get an idea. The overall income of the nation is considered as national income. So how the national income is calculated? What is the topic of the national income? That whole factors we are going to see up in the chapter number 9. Then it is the chapter number 10. Chapter number 10 is budget. So budget can be known by you from the 8th or 9th standard. Even day-to-day life in your house also you will listen about budget. So here we are going to see about the budget in a very detailed manner. How to make a budget, how to consider a budget, what are the topic that is included in the budget, what is government budget, how an Indian economic is dependent on the budget. All these portions we are going to cover up in the chapter number 10. After that, chapter number 11, economic thoughts. Economic thoughts mean you know that there were many legends in the ancient time who have given many concepts related to the economy. So in that we are going to see the Pandit Deen Dayal and rather than Mahatma Gandhi, Chanakya, Kautilya Chanakya, how they have given their thoughts on economic. What was their contribution of that towards the economic? In this manner, this 11 chapters are going to give up a goosebumps related to the economic subject. Rather than that, if you are knowing why we are studying this portion, then when you are choosing up the commerce, in commerce, economic is also an important subject. I said is also, and because account, state, economic and OCM, these 4 subjects are considered as an important or main subjects of the commerce. So economic teach you the financial needs and how it should be dealt up, how it has to be faced up, what are the problems, surrounding problems and all things that all are covered in the economic portion. So it will give you a realistical, practical view. You will consider after reading this subject, you will tell that this whole topics we were knowing, but we were not knowing in this manner. So you will know how reality is going around you, what is the condition of economic around our country and other countries. That all one-to-one detail you will learn, which will give you a good citizenship for any country. As a economic teacher, I consider that economic is a very practical subject and it can be a very live and a good, we can say that interesting subject. So here we are ending up the discussion of the index. So now today's portion, after the introduction and every portion, we will start up with our chapter number 1. Chapter number 1, economics and introduction. So what are the portion that we are going to see up in the chapter number 1? First of all, introduction is given about the economics. So in economics, you have to write introduction in answers, question answers. When you are attending the detailed one, 5 marks question answers are there. In that you have to write the introduction. That's why on each chapter the introduction is given first. If you don't have any idea, you can read this and you can amend. Amend means you can make your own words and you can write this introduction in your own words for each and every answers according to that question. Okay, so first of all, introduction is given. Then meaning of introductions, we are meaning of economics we are going to see. And second, then after that, what is the meaning of economic? After knowing that, we are going to see the economics in Indian thought, because economics is seen in worldwide portion, even in America, USA, China, everywhere. So according to international way and according to our Indian way, we are going to see the economics. After that, we are going to see the development economic as a science in West.
So how the economic developed as a science in economics. So economic is considered as science, arts, and we can say that it is science, arts, and a professional shape to do get work. So in this manner it is considered in many ways, social science also. So how it is considered, that we all going to see in a very detailed one. After that, economic activity and non-economic activity. What is economic activity and what is non-economic activity, the difference between both of them, that we are going to see. And microeconomics and macroeconomics, detailedly we are going to see. So if you are seeing economics is always divided into two parts, micro and macro. So in CBSE and ICSE schools it is taught as at two books, microeconomics and macroeconomics, but in GSEB there is only one book, but both the topics are covered in a very detailed manner. Okay, so here we are studying only one book, they are studying two books in a very thick manner, in a very depth manner. So don't worry, I was a teacher there also, so I will give you the depth knowledge only, so don't worry about that. In a very we can say that stressed manner, it is very easy subject, we will go with the textbook in a very easy oriented way. After that we will see presentation of information in economics. In economics, if you want to present any data, then how we can present, that portion is also taught up in this chapter. After that we will see importance of statistical information. Statistical information means the datas, how the datas are very important in economic, how we can get the data, how the datas are supportive, that all things are we are going to see in this chapter. After that, how the data are being collected, it is important that we saw, but how it is collected, how we can see that it is the oriented one or not, we can trust it or not, that things are also been said up. After that, how we have to present that gotten data in the graph. In economic, most probably we make graph. Okay, in 12th standard also graph related one chapter is there in economics. So this is an important chapter. Each and every chapter in the 11th standard is very important. Why? Because it is giving an connectivity to the 12th standard. अगर आपको ऐसा लगता है 11th standard की बुक ऐसे ही निकाल देंगे, 12th में ध्यान दे देंगे, don't do that mistake in economics and BA. ओके, बोथ थियोरेटिकल सब्जेक्ट इज लाइक दैट. अगर आप अभी यहाँ ध्यान दोगे तो इसकी कनेक्टिविटी ही तुम्हें कहीं ना कहीं 12th में दिखेगा. जैसे 9th का मैथ्स 10th में हेल्प आउट करता है, इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स एंड BA इज गोइंग टू हेल्प आउट इन 12th स्टैंडर्ड. सो द कॉन्सेप्ट्स आर टॉट अप हियर, द कॉन्सेप्ट डेप्थ इज सीन अप इन द 12th स्टैंडर्ड. सो बी वेरी, I will say that be very attentive in little portions in economics and BA. So and afterwards, that how to present, we are going to see the importance of economic in the international manner also and national manner also. So here our chapter is going to be ended up in a very detailed portion. So by the summarization or the index, we can see that there are lots of topics covered up in the chapter number 1 only. So it means now we are on a pace where we can develop each and everything in a very detailed manner. So I know one thing very well, you are now on 11th standard, whether it is a mass promotion or you have gave the exam, whatever the situation, but you deserve to be on the 11th standard. It means you are on 11th standard. If you deserve that, you have to earn that. So in 11th standard, if you will do good, no one will say that you are on the mass promotion, okay, because 11th standard result is to be given up by your evaluation only. So be your best, learn in a best manner and attempt the exams in the future in a very best manner, so that you can get a very good percentage. Because 10th you didn't got a chance to prove yourself, but in 12th standard you can prove yourself. So for that you have to start preparing from 11th standard. Don't consider 11th standard is a easy way, it is a tough way, because all new subjects you are going to face up. So face it in a very we can say that motivating way, in a very I can achieve it banner way, okay, because why it is needed. If you will pace up with little competition, you will learn many good things in 11th standard, and that things will help you out for the preparation for 12th standard. So don't take 11th standard in a very easy manner. On the first day, on the first lecture, I am saying it, whenever you feel 11th standard is very easy, I can study on 12th standard, rewatch this video first, so that you can get an idea that it is not that much easy. We have to prepare from 11th standard for 12th standard. Remember my words and mark this word, that 11th is the base for 12th standard. So be preparative in a very well manner in the 11th standard. Okay, so now chapter number 1, economic and introduction. I'm going to read the introduction, I will read it out and I will explain it out in a very well manner. Introduction. Human beings are intellectual creatures, and thus they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environments. To ensure happy living, they have created various institutions like social, political and economic system.
ह्यूमन बींग्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, इंसान, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल क्रिएचर, है ना, दे हैव सो मेनी माइंड्स, दे कैन डू एनीथिंग. सो ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल क्रिएचर, बहुत दिमाग वाले क्रिएचर है, ये माना जाता है. इसीलिए दे आर एबल टू ग्रुप. You also see in class also particular groups are there. तो हम जल्दी ग्रुप अप कर देते हैं, हम एक दूसरे से अलग दिखना पसंद करते हैं. वी लाइक टू गेट डिस्टिंग्विश, एग्जामिन दैट सराउंडिंग, आजू बाजू क्या चल रहा है हम इसको ध्यान देते रहते हैं. वी एग्जामिन दैट पोर्शन, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं. हम ये भी कोशिश करते हैं ईच एंड एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू कीप अवर सेल्फ हैप्पी, हवर लिविंग हैप्पी. हर कोई यही चाहता है कि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, खुश हो, उसको हर चीज़ें जो चाहिए वो मिलता रहे. इसलिए वो क्या करता है, वेरियस इंस्टीट्यूशन बनाता है. जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे हम मूवी थिएटर्स की बात कर लेते हैं, पब्लिक गैदरिंग के लिए हॉल, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, रेदर देन दैट टेम्पल होता है. ऐसे बहुत सारी जगह होती है. और पॉलिटिकल्स में भी लोगों को इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स में भी लोग ज़्यादातर अपना सोशलाइजेशन कर लेते हैं. इकोनॉमिक एक सिस्टम होता है. इस तरीके से एक इकोनॉमिक सिस्टम वो क्रिएट करते हैं. सो नाउ लेट अस सी द सेकेंड पैराग्राफ. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम सिग्निफिकेंटली, सस्टेन दैट over a long period of time and to resolve the complexity in such system, human being formulated certain principles based upon various philosophies and science. अगर हमें ये सिस्टम को समझना है, मैंने तो बोल दिया इकोनॉमिक सिस्टम, क्या मंदिर बना देना, पॉलिटिक्स में घुस जाना इकोनॉमिक सिस्टम हो जाता है? नो, इसके अंदर और भी बहुत ब्रीफली इकोनॉमिक सिस्टम को देखा गया. तो अगर हमें ये सिस्टम को समझना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, देन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के लिए तुम्हें इस चीज़ को सस्टेन करना है, यानी उसके अंदर ही रह के लंबे समय तक जाना है. सो इफ़ यू वांट टू stable up there for a long time, sustain that for a long time, for that you have to understand the complexity in such system. कोई भी सिस्टम में टिके रहने के लिए उस सिस्टम की जो मुश्किल चीज़ें हैं उस चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है. तो इवन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए हमें उसकी कॉम्प्लिसिटीज को जानना पड़ेगा. कॉम्प्लिसिटी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉर्मुलेट कर देते हैं. हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारा सर्टेन प्रिंसिपल होता है, एथिक होता है, उसके ऊपर ही हम चलते हैं. तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो वेरियस फिलोसॉफीज में दिए जाते हैं. हम फिलोसॉफीज बोलते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं तब बोलने का मन नहीं करता है ना, वी से दैट, रादर देन दैट वी से दैट बहुत खुश होते हैं तो हम बिंदास हर चीज़ कर लेते हैं. सो दिस आर फिलोसॉफीज, दिस आर सेड बाय ह्यूमन बींग्स ओनली. ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने फाउंड अप किया और ह्यूमन बींग्स ही इसको फॉलो करता है. उसी तरीके से बहुत सारे फिलोसॉफीज है, साइंस है, जैसे हम कहते हैं कि साइंस है, इसके पीछे ये साइंस है, इसके पीछे ये लॉजिक है. तो उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि वो हर चीज़ पे फिलोसॉफी या साइंस को देखता है. उसी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए भी हमें इकोनॉमिक का फिलोसॉफी और साइंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन अप इन द फर्दर पोर्शन. In the prehistoric and in the early historic period, human being dealt with differences and solved certain complexity by entering in feuds, fights, and battle. However, with the development and progress of civilization, human beings were able to logically resolve differences and complexity of the life by creating and using philosophical principle and economic development as a philosophy and science of rational economic behavior. प्रीहिस्टोरिक यानी पहले, पुरख के टाइम में, अर्ली हिस्ट्री के पीरियड में, ठीक है. प्री हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री से पहले और हिस्ट्री के टाइम पे, और एशियन टाइम इन एसेस वेज यू यूज द वर्ड एशियन टाइम. सो एशियन टाइम, अर्ली पीरियड, इन ये सारी पीरियड्स की अगर हम बात करते तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस थे, ठीक है. डिफरेंसेस थे यानी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी. इवन नाउ डेज ऑल्सो वी आर हैविंग डिफरेंस, सब एक जैसे तो नहीं होते. देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी ह्यूमन बिहेवियर. और सॉल्व सच कॉम्प्लिसिटीज, बहुत सारे लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम थे जो वो सारे मुश्किलों को सॉल्व किया गया. जैसे एंटरिंग इन फ्यूड्स, फाइट. हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें किसी के साथ कोई तकलीफ है, हम उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं और वो झगड़े से वो मुश्किल हमारी जो हम उसको बोल देते, तेरी ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत नड़ती है, मुझे ये चीज़ से बात ही नहीं करना.
तो इस तरीके से प्रॉब्लम करके, कुछ फ्यूड्स करके हम वो चीज़ को सॉल्व करने की करते। काफ़ी बार बैटल्स भी देखे गए। ये तो हम एक दूसरे की फ्रेंडशिप में है तो हम झगड़ के भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द स्टेट्स, पीपल लिविंग इन स्टेट ऑफ टू स्टेट, दो अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, वो दोनों राजा की बनती नहीं है, प्रॉब्लम है, तो वो झगड़ा करके, बैटल करके फिर उसको समाधान करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी बैटल हुए थे, काफ़ी फाइट्स हुए थे, बट वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स को हटाने की बहुत कोशिश किया गया। और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते गए वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया, लोगों को पता चलता गया। जैसे अभी हम बोलते हैं ना, अभी नॉर्मली अगर अभी 10 साल पहले देखते, पानी के लिए भी लोग झगड़ते थे। अभी ऐसा नहीं है, वी गेट द वाटर इन अ वेरी वेल मैनर। हम कहीं जाते हैं, कहीं पानी नहीं आता है, कुछ होता है, तो हम पानी के लिए नहीं झगड़ते। वी आर एजुकेटेड वन, वी आर डिजिटल डेवलप्ड। हम क्या सोचते हैं, ओके ठीक है, नहीं होगा तो बोल रहा है, लीव इट। हम में वो पेशेंस आ गया। हाउ दैट पेशेंस केम, दैट इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। हमारा सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ। हम आदि मानव जब थे, व्हेन वी वर प्रिमिटिव पर्सन्स, हम कपड़े नहीं पहनते थे, हम जंगल में रहते थे। इट इज नॉट लाइक दैट ना। नाउ वी आर लिविंग इन द हाउस, वी आर हैविंग द क्लोथ, वी आर सीइंग मैनी सराउंडिंग इन अ वेरी गुड मैनर। हम खाना पका के खाते थे, दे वर ईटिंग इन अ वेरी रॉ मैनर। सो ये दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, हम उनके पास गाड़ी नहीं थी, अब हमारे पास 4 व्हीलर तक चीजें हैं। हमें यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलता है। इवन वी आर हैविंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, जब वो उस टाइम पे नहीं था। तो जो प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन हैज बीन ऑल्सो सीन। ह्यूमन बीइंग जो अपने हिसाब से फिलोसॉफी के प्रिंसिपल बनाता है और उसके पीछे चलता है। जैसे एक टाइम था जब हम एक चीजें लाते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। ठीक है, आदि मानव लोगों की बात करते थे, दे डोंट यूज टू शेयर, दे यूज टू ईट, देन दे यूज टू थ्रो इट। ठीक है, फिर भी कोई आके खाता था उसको मारते थे। दैट वॉज प्रिमिटिव पर्सन, बट वी आर नॉट लाइक दैट। हम लाते हैं, कुछ रहता है, ज्यादा है तो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो हमारी फिलोसॉफी है, वी हैव लर्न दिस थिंग। सो ऐसे ये तो नॉर्मल एक जो बोलते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर की फिलोसॉफी की बात करती हूँ। उसी तरीके से इकोनॉमिक भी डेवलप हुआ। इकोनॉमिक यानी मनी, monetary financial aidings, that is considered as economic. What is economic, that we are going to see in detail, but now we are considering as a money. Okay, तो money, the monetary financial aids, तो वो भी डेवलप हुआ है। उसके साथ साथ फिलोसॉफी बिहेवियर भी डेवलप हुआ है। साइंस भी, इकोनॉमिकल जो बिहेवियर माना जाता है एक इंसान का, जैसे पैसे के रिलेटेड एक इंसान कैसे सोच सकता है, उसका साइंस भी देखा गया है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी फिलोसॉफी है, जो भी प्रिंसिपल्स है, ह्यूमन बिहेवियर, उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर के अंदर देखने वाले। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन इन अ वेरी वेल मैनर. So now let us move on with the meaning of economic in a very detailed manner. Meaning of economic. The word economic in Indian thought is Arthashastra, which is derived from the Sanskrit word. Artha means purpose or goal, and thus Shastra in Sanskrit means the science of benefit or purpose in practical life. It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit. So the word economics, पहले सबसे पहले हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जो वर्ड है, पहले हम इंडियन थॉट्स के ऊपर जाएंगे फिर वेस्टर्न थॉट्स के ऊपर जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट द इकोनॉमिक वर्ड इन इंडियन थॉट, इंडियन वे ऑफ थॉट से अगर हम देखें तो इंडियन वर्ड में इकोनॉमिक कौन से वर्ड से आया, तो अर्थशास्त्र से आया. व्हाट इज अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र वर्ड संस्कृत में बोला जाता है, उसी का इंग्लिश फॉर्म इकोनॉमिक्स माना जाता है. अर्थशास्त्र को दो शब्द में हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्थ एंड शास्त्र. अर्थ मीन्स वेल्थ, ठीक है, वेल्थ, पर्पस, गोल, ठीक है, हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, कोई अर्थ, मीनिंग. विदाउट एनी मीनिंग वी आर नॉट लिविंग द लाइफ. तो व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस, दैट इज अर्थ. एंड शास्त्र, द शास्त्र मीन्स द वे ऑफ लाइफ, द प्रैक्टिकल लाइफ दैट वी आर लीडिंग, दैट इज वे. शास्त्र मीन्स विद है ना, हमारे शास्त्र में ऐसा बोला गया, शास्त्र मीन्स द वे ऑफ लिविंग, द साइंस ऑफ लिविंग. तो अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे इन संस्कृत, हम जब हमारी लाइफ कुछ पर्पस या गोल के वे में रहने की कोशिश करते हैं, हमारा कोई गोल या मकसद होता है, कोई पर्पस के लिए हम हमारी लाइफ जीते हैं, तो उसे अर्थशास्त्र बोला जाता है. अब हर एक की लाइफ एक पर्पस से ही जिया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है, यानी इकोनॉमिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है. अब एक साइंस जो हमारा पर्पस या बेनिफिट के लिए हमारा ह्यूमन लाइफ कैसे प्रैक्टिकली होना चाहिए वो बताता है, उसे अर्थशास्त्र बोला जाता है. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि इंसान की ये फितरत है
कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर है कि वो हर चीज़ में अपना बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करेगा। हम कहीं जॉब में जाएंगे, फ्री में जॉब नहीं करेंगे, सैलरी की बेनिफिट ढूंढेंगे। हम किसी के घर पे कुछ काम करके देंगे, फ्री में कुछ करके नहीं देंगे, कल हमें कोई काम आएगा तो करके देंगे, ऐसा एक बेनिफिट होता है। तो इन शॉर्ट इंसान का दिमाग, एक बिहेवियर ऐसा होता है कि वो हर जगह पे एक बेनिफिट ढूंढता है। जैसे हम मम्मी को कोई हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, ये तो एक स्मॉल एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर साइकोलॉजी। अगर हम मम्मी को कोई हेल्प आउट करते हैं, जैसे हमें बाहर नहीं जाना और मम्मी बोलती है जाओ शॉप से ये ले आओ, व्हाट वी विल से हाँ ले आऊंगा बट मैं 5 रुपए का ही ले लूंगा। दैट इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अस। हम क्या सोचते हैं, हमारा ये बेनिफिट होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, हमारा फायदा क्या। ईच एंड एवरी टॉपिक वी सी दैट व्हाट इज अवर बेनिफिट। तो सीकिंग द बेनिफिट दैट इज एन ह्यूमन बिहेवियर। हर चीज में फायदा देखना ह्यूमन का बिहेवियर होता है, और ये जो साइंस हमें ये सिखाता है उसे इकोनॉमिक्स माना जाता है। Now we will see the English meaning of economic. The English word economic is a derivative from the Greek word oikonomos. Oiko means household and nomos means management, and hence economics means management of household. तो यहाँ पे जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस से लिया गया। इवन जैसे अर्थशास्त्र को डिवाइड किया उसी तरीके से ओइकोनॉमस को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ओइको मीन्स हाउस होल्ड यानी घर खर्च, ठीक है। नॉमोस मीन्स मैनेजमेंट, हमारा घर का जो खर्चा होता है, मम्मी उसको बजट बना के मैनेज करते हैं ना, पापा ने 10,000 अर्न अप किया, उसी 10,000 को घर पे कैसे खर्चा करना है, किसके ऊपर कितना, कपड़े में कितना खर्चा करना है, खाने में कितना खर्चा करना है, दूध का कितना खर्चा, रदर देन दैट इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल। तो ये सारा जो एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, यू नो दैट दिस ऑल थिंग्स यू आर सीइंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बच्चे से ये टॉपिक देखते आ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें घर का खर्चा देखा जाता हो, दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक्स। अब ये बताओ, इकोनॉमिक्स आपने बचपन से ही देखा है, आपको कब से नहीं पता, इवन यू हैव नॉट रीड एज अ कॉन्सेप्ट, इसको आपने जैसे थियोरेटिकल मैनर में आप पढ़ रहे हो इस तरीके से आपने पढ़ा नहीं है। बट इकोनॉमिक्स आपके डे टू डे लाइफ में हमेशा, जैसे आप जन्मते हो, जैसे आप बर्थ लेते हो, तब से ही लेके आपके डेथ तक इकोनॉमिक्स आपके साथ काम करता आता है। इफ यू कैन सी, आपके फादर अर्न आउट करते हैं, वो पैसे लाते हैं, उस पैसे को घर पे खर्चा किया जाता है, इट मीन्स योर फादर इज ऑल्सो हैविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। आपका पापा भी कहीं पे जॉब इसीलिए करने जाते हैं क्योंकि उनको सैलरी मिले, ही सीकिंग बेनिफिट। क्यों बेनिफिट? क्योंकि घर चलाना है, घर पे सबको अच्छे से रखना है। सो इवन योर मदर, इफ यू आर सीइंग शी इज नॉट अर्निंग ऑल्सो, शी इज एट हाउस होल्ड ऑल्सो, घर पे ये घर का ही काम करते हैं, बट वो घर का काम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे टाइम पे खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, आपकी सारी देख रेख रखी जाए। तो उसके लिए भी वो जो कपड़े धोते हैं या वो सारी चीज़ें खाना बनाते हैं, उसके जो वेजिटेबल्स लाना पड़ता है, कपड़ों के पाउडर लाना पड़ता है, ये सब फ्री में तो आते नहीं, उसके पीछे खर्चा करना पड़ता है। इट मीन शी इज ऑल्सो डीलिंग विद इकोनॉमिक्स। तो दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो इकोनॉमिक के साथ डेल्ट अप नहीं करता हो, जो डील ना करता हो। हर एक इंसान इकोनॉमिक के साथ कहीं ना कहीं डील अप करता है। सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन दिया और इतना टॉपिक देखा, तो आज का टॉपिक हैवी नहीं करना है, आज का टॉपिक यहाँ तक रखना है। बट कल से हम एक एक पेज देखेंगे, 1 पेज 1.5 पेज जैसे देखने की कोशिश करेंगे। सो अब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होता है। यूजुअली दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल दे रही हूँ। सो हियर अवर वीडियो इज नॉट एंडिंग अप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समराइजेशन। आज हमने ये वीडियो पे जो चीज़ देखी उसी चीज़ का एक छोटा सा रिविजन करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट रिविजन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. Students, I hope that you all have understood the today's question in a very well manner. So now let us have a short summarization of the topic that we have seen in a very well manner. So today we have seen the chapter number 1, Economic and Introduction. In that we have seen about the introduction. It has been seen that we human beings are very distinguished in the manner we are very different. We are able to make up a group and enjoy our life in a very better manner. Each and every human being is trying to have a good life in their living time. So when we are living, until we are not dying, until that we want a very good lifestyle and all the needs to be fulfilled. For that purpose we are always ready to make different group and always seek many benefits surrounding to us. We make social groups, political groups and environmental groups according to our needs and wants. So in this manner we have seen there is always psychology
psychological and little principles, fundas that is always been carried out by the human beings. So in this also, today's chapter also, we have seen such introduction for the economics. The human behavior that is showing up the economics purpose is considered as the economic related behavior. But first of all, knowing the economic behavior, we must know what is economic. That's why we have seen the meaning of the economic in a very detailed manner. We have seen the meaning in this manner, that economics is a word, if you are seeing in Indian thought, is derived from the Arth Shastra. Arth Shastra can be separated as two words, Arth Shastra, where Arth means purpose and goal, and Shastra means, we can say that the science or the way of living a practical life is considered as the Arth Shastra. So in short, you can say that when a human being is having a purpose or goal and seeks benefit to complete his practical life, is considered as Arth Shastra. And then we have seen the English word economics, where it came. The word economics came from the Greek word oikonomos. Oikonomos means oiko and nomos. Even this word can be classified in two ways. So oikonomics means, oiko means household and nomos means management. So the household management that is done by each and every individual to sustain their living is considered as the economics. So in short, economics is revolving around each and every individual in the world. None of the individual is free from the economics. So until this, we have seen in a very detailed manner. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.